IVM. Sadhu, hello. हेलो इतना जोर से कौन बोलता है? नकल करता है तो माइक टेस्ट करा हमें। अच्छा। तो हम हमारी पॉडकास्ट में काफी बार मतलब ऑलमोस्ट हर बार अंडररेटेड ओवररेटेड खानों की बात करते हैं, बट इस बार पूरा एपिसोड एक अंडररेटेड cuisine के बारे में जो मेरे ओपिनियन में अंडररेटेड है, which is बिहार। कश्मीरी फूड। अच्छा, कश्मीरी फूड। बिहार कश्मीरी अब food अपने branded एजेंडा food। डाल दो इसमें। तो तुमने पूछा क्या था अंडर, तुमने बोल दिया बिहार होगा। और हम लोग एक्सपर्ट नहीं है कश्मीरी खाने में। सादा को थोड़ा बहुत पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब मुझे टेस्ट पता है बट ज्ञान नहीं पता। तो वी हैव इनवाइटेड Nalini ji, Hans and Mikhail of Matamaal restaurant. It's a restaurant in Gurgaon. It's one of my favorite restaurants in Delhi NCR period. साथ में But बोलना, not मेरा भी just बोलना। Kashmiri restaurant, but overall one of my favorite places to visit. So welcome to our guest. थैंक यू Thank you. It's our pleasure. So शुरू करते हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं। As you have figured, I really like it. So, what does Matamaal mean actually? The word. So Matamaal means Nani's home. It's a Kashmiri word. So Nani's home is your maternal grandmother's home. That is Matamaal. You asked Got me it. just that only. You asked me what is Matamaal, and I told you Matamaal is Nani's home. पॉइंट टू पॉइंट सवाल है। Perfect. जितना Point पूछा to उतना point. ही मिलेगा। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। थोड़ा एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स जवाब चाहूंगा आपसे, बिकॉज ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जब Matamaal स्टार्ट किया, was it primarily to feed fellow Kashmiri Pandits in Delhi NCR or to showcase your cuisine to a wider audience in the city, or a bit It of both? was bit of both, but the second one is more relevant. We wanted to showcase, we wanted to tell people what Kashmiri cuisine is. Because since we had moved out of Kashmir, in 90s, most of the Kashmiris moved out of Kashmir. And this cuisine was not known to anyone. Whenever you asked anybody about the Kashmiri cuisine, they would know Rista and Gushtaba. And nobody knew Kashmiri Pandits existed and they have a cuisine too. कश्मीर में कोई मौका ही नहीं मिला हमको to showcase our dishes because everything was happening inside the kitchen. And I had seen my mother, grandmother, mother-in-law all the time in the kitchen. Even on the festivals, whole day, not getting time to dress up. Dress up का तो point ही नहीं था. All the day cooking and feeding people. So that urge was there that we do so much and our cuisine is totally different. See, I have traveled with my husband worldwide. And I have not found anything similar to this anywhere. So this was like burning desire that अब तो हमको कश्मीर तो है नहीं हमारे पास. At least people should know what we eat, what Kashmiri Pandits are all about. So that was a huge force behind. And the second one, yes, of course, Kashmiri needs at least one meal a day Kashmiri food. मतलब वो बाहर का कितना भी खाए पर उसको एक मील जब तक नहीं मिली उसको वो सुख नहीं मिलेगा जीवन का. उसको वो चाहिए, वो हींग का टेस्ट चाहिए उस थिंग. बिकॉज माय सन्स वर आल्सो सीइंग, some of them were studying out, like not at away from home, and they would call me for recipes. Mama, I want to eat this. And Hans was with us that time, but Mikhail was in Canada. He would often call me how to make. Mama, I would really want to eat kalia. I really want to eat rogan josh. How do I make it? And then I would give him recipe. Then he wouldn't understand some things. Ingredients were not there available. So I wanted somebody to have those small joints where people could readily, please, auntie, can you send me one portion of rogan josh and some rice with it? You know, it would satisfy my soul, their soul as well. So that was also one big idea. कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ. बच्चा मीन्स एज अ होल कश्मीरी की कम्युनिटी एंड प्रॉब्ली जब दूसरों को पता चलेगा दे विल आल्सो लाइक इट. आई वांटेड टू पॉपुलराइज इट एज मच एज पॉसिबल. लोगों को बताएं कि कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा भी दुनिया में मैं जब आपके रेस्टोरेंट आता हूँ तो a full Kashmiri experience. मतलब there are paintings of shikaras, there are photos of Kashmir. तो ऐसा लगता है कि मैं कश्मीर आ रहा हूँ. तो वो है ना, that was piece of Kashmir had to be brought here in this concrete jungle. This was not easy. This is my husband's effort all along, his effort to bring even the smallest of Kashmiri, like we have those जिसमें शुप होता है एक चीज जिसमें चावल साफ करते हैं, even those things are there.
krav, shoe, boat. Can you imagine making a boat inside the restaurant? That was his. I don't know how he deals with carpenters and architects and how he gets his things done, but he makes sure that he gets that piece of Kashmir is here. And then we added breads also. Is concrete jungle mein ek mitti ka tandoor banana was not easy. On second floor, we are on second floor. But he made it possible. He made everything possible. And he pushed us all into it. And we readily also, all of us were from the beginning, 4 of us. There is nothing which we have done on our own. Me on our own. I've done nothing on my own. All 4 of us are in this. We raised this baby together. This was my 3rd baby. And all of us, like they were elder brothers, and my husband and me, we raised this. And this is how Matamaal is here now. Lovely. And for those who don't realize the importance of the tandoor that Anilji is talking about, Matamaal is not just a restaurant, it's also, you could also call it a bakery. There are a lot of baked items sold. You can take it home. You can obviously eat it at the restaurant. So both tandoor becomes even more important. Yeah. And on also the Kashmiri masalas. Bakery. Yeah. Then the masala. Yes, that will be. We will come to the breads later. But yeah, नलिनी जी से बताया कि फुल फील है, तो अगर आप कश्मीरी फील है तो इनफैक्ट व्हेन यू वॉक इनटू द रेस्टोरेंट एसी बहुत ही कम होता था कि फुल फील है, मुझे ठंडा लगे अंदर आके। क्या फेक सा स्माइल दिया तुम, अच्छी नकली अच्छा। So one question about the food itself, like when I learned about Matamaal, right, way back, and I remember watching an episode with Chef Kunal as well, where he was, and then there are so many other chefs who have gone to the restaurant. What I'm curious is, when I heard about the place, when I went there, in my mind, the concept, whether it is a Pandit or a Kashmiri Muslim or Kashmiri Pandit food, I wasn't sure. And that's why I remember asking you as well, Nalini, when we met the first time. So then comes the question that, was the idea to sort of celebrate and popularize Kashmiri Pandit food or Kashmiri food in general as a cuisine, that this is what we eat, what you said, ginger garlic ke beyond bhi cheezein hain. So what was the major idea? Difference भी क्या है दोनों में, कश्मीरी मुस्लिम पूरा कश्मीरी? मैं ही बोलूं कि वो बोलेंगे, आप पूछो इनसे, वो भी तो कुछ बोले। हाँ, Mikhail will take over. Yeah, our test has started, unfortunately. But to give you some context, I think just to follow up on what my mom said, the essence of what my dad was trying to create at Matamaal is that feeling of Kashmir. As soon as you enter the restaurant, you really know and you really feel like, ki, haan, bhai, main Srinagar mein hoon, I'm sitting in a houseboat, and he's at that level of perfectionism where he also feels it's important that we cook the way Kashmiris would cook at home. So he's actually tried to figure out, can we do it in coal fire? Can we do it in pots? And we've actually adopted some of those ancient techniques as part of the modern style of cooking. So there's a lot of that extension in this, which you'll see in the food. And to answer your question, eventually, like my mom is an expert in Kashmiri Pandit style of cooking. So unka jo focus tha, wo primarily uspe start hua. But when we slowly got into it, one of the really funny anecdotes is when she started, she noticed a lot of chefs were introducing Rogan Josh as a recipe. And when they were doing it with ginger garlic, with onion, with tomatoes, and she didn't like it at all because, she really represented what Rogan Josh stood for. So unne bahut sara reach out kiya. She personally reached out to some of the chefs and, I disagree. Whatever you represented the dish as, it's not accurate. And I'd be happy to discuss. And then it actually led to some conversations with some of these chefs. So, it started off that way where we wanted to represent ourselves the best way possible. So, usse ye extension shuru hua. What is Kashmir? What is the identity of Kashmir? It's not just Pandits as its own. It's this evolution of this very sacred style of cooking. Like if you look at Wazwaan, it's a celebratory event. Ki bahut log milke, and I won't go into the details of Wazwan. I think I'll let my mom describe it because she's definitely an expert here. But when they eat the food, they all eat it together at a wedding. Milke khate hain. The entire goat or lamb is used for that event, right? No part is left. So there's a lot of historical. There's a lot of emotional connection with food throughout that state. Upstate being here throughout that territory. But when you look beyond that also,
do have the Ladakhi cuisine, which is also in its own standing, right? So this was a natural progression for Matamaal to sort of incorporate the Wazwan style of cooking too, and we'll continue to support and promote Kashmir as much. And then how would you differentiate the cuisine? So I mean, one thing, of course, all of us know that the Kashmiri Pandit and Kashmiri Muslims have one difference is the usage of onion garlic. So Kashmiri Pandits don't use onion garlic and Kashmiri Muslims do. But more or less, food remains the same, right? Is there any other difference in the preparation itself? Yeah, the style of cooking is certainly different. The dishes are different. The main thing, that onion, garlic, ginger we use, tomatoes we don't use. But even the style of cooking is different. Even the flavors are different. On the whole, if you describe khade masale, we also use, they also use. But only that they use onion and the flavors come out. But mutton hum log bhi khate hain, wo log bhi khate hain, bahut zyada khate hain. And vegetarians, both of us, like Muslims and Pandits, yes, of course. Yeah. This is extension of that cuisine. Pandit cuisine is extension of Wazwan, or Wazwan is extension of Pandit cuisine. It is that historical perspective chala gaya, but we're all connected in the same sense. We are all connected. Correct. Now, because you're mentioning about Wazwan, right? And I'm really interested because there's a whole lot of discussion about Wazwans, but there's also tradition of Wazwan which I have learned, right? Which is that, first of course, I would love listeners, what are Wazas or the Wazwan dish? Then I also know that शादियां कश्मीर में होती हैं वाजास के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और कुछ ऐसा और कोई ट्रेडिशन है वाजास के ऊपर, and especially when you pick up the food, when you select the food which will go on the thal. So what is the whole this mysticism? एक mysticism है around वाजास के, ये वाजा है. पहले मैं बोल रहा था कि हमारे लिस्टर्स को बता देते हैं कि वाजा कौन है और वाजवान क्या होता है, जस्ट बेसिस कवर करते हैं. अब आते हैं हंस के ऊपर. हंस, it's your turn. So I've experienced this Wazwan once in my lifetime. So Wazas are basically chefs. They're called chefs, and Wan matlab area or kitchen. So chef का area है, chef का kitchen हो गया Wazwan. That's true जो आप बोल रहे हो कि availability पे, chefs की availability, Wazas की availability पे शादी होती है, which is very true because it's, in my understanding now, they've reduced it to a 36 course meal, जिसमें मतलब इतनी efficiency build हो गई है उस पूरे process में, जितना traditional process आप सोचोगे, पर आज के दिन उसमें काफी efficiencies build हो गई है, and I'll also explain कैसे. So the seating is quite simple. I mean, 6 people or 4 people would sit around that plate, जिसमें राइस आएगा और एक-एक करके चीजें आएंगी. उसमें कुछ चीजें डिफाइंड है, जैसे गुस्ताबा इज नोन एज द किंग ऑफ द मील, तो वो सबसे एंड में आता है, राइट? उसके हिसाब से बीच में स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक योर कबाब्स, तबक मास, एंड देन इट थ्रू प्रोग्रेशन फिर आगे बढ़ता रहता है. इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी दैट दे हैव बिल्ट इज कि बहुत खाना वेस्ट होता है इस पूरे प्रोसेस में, तो सबके पास डॉगी बैग्स होते हैं कि मतलब वंस दे डन विद देयर मील दे कैन लाइक पुट द फूड एंड टेक इट बैक होम, क्योंकि बहुत एक्सेसिवली खाना सर्व होता है, एक्सेसिवली वेस्ट भी हो सकता है. The process starts 2 days prior. So just to give you some sort of context, in the Kashmiri Pandit wedding phase, we call it a sal. उसमें भी वाज़ास, you can correct me if I'm wrong, but उसमें भी वाज़ा ही कहेंगे chef को, and preparation will start 2 days prior. We call them basically cooks. So 2 दिन पहले preparation start होगा. Wedding venue पे majorly एक टेंट लगेगा, और एटलीस्ट अभी पंडित क्विजीन में तो हम गैस स्टोव्स वगैरह लगाते हैं, बट टिपिकल वाजवान में तो पूरा वो पॉट्स पे चूल्हा बनता है वहाँ पे मिट्टी का, एंड वुड एंड वो सब में प्रॉपर ट्रेडिशनली होता है. द प्रीवियस नाइट बिफोर द वेडिंग और द डे द वाजवान इज गोइंग टू बी सर्व्ड, मतलब यू कैन से 12 to 15 पीपल विल सिट, एंड पूरा लैम्ब और जो गोट जो मीट है वो कट होगा, एंड इट विल बी पास्ड अराउंड, जिसमें वो हैंड पाउंडिंग करते हैं. सो दैट होल प्रोसेस इट्स लाइक अ सप्लाई चेन. वो 12 लोग लाइन में बैठते हैं, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट जो मैंने विटनेस किया था, जब गाना गाते हैं सब एक सिंक में, एवरीवन इज हैमरिंग द स्टोन बेस विद अ वुडन हैमर, एंड वो मटन बेसिकली फैट ऐड होता है, कोई सॉल्ट ऐड करेगा, कोई उसको और मारेगा, फिर आगे पास करेंगे. दे विल ब्रिंग इट टू अ level where they can pull out the meat easily and roll it into a ball, and then they boil it after that. So वो एक लाइन से पूरा प्रोसेस चलता है.
So in itself, like Wazwan is, it's something that everyone should experience. It's something that is evolving, but not at a pace कि वो modern touch बहुत ज़्यादा आ रहा है. वो traditions बहुत बरकरार रखे हुए हैं वहाँ पे in श्रीनगर. And I mean, मैं कोई opportunity नहीं छोड़ता हूँ. जब भी option मिलता है, जब किसी की शादी होती है, तो I always ensure कि मैं वहाँ जाऊँ. But at the same side, Matamaal में भी रखा हुआ है. You can add that, ना? We are doing it the traditional way only. Yes. So coming to that, and आपका एक question था कि like when we started off as a Pandit restaurant, that's what we were known for, that's what we wanted to promote. But and this was a long discussion also before introducing Wazwan, that our childhood is mom's childhood must be different, of course, from our childhood. But Wazwan and Muslim cuisine has always been a part of us. Like it's not कि हमने कभी खाया नहीं, हमने कभी appreciate नहीं किया, हम कोई Muslim families को जानते नहीं थे. कम्युनिटी एक ही थी. सो हमारे बचपन में भी हम दिल्ली हाट जाते थे स्पेसिफिकली वाजवान खाने. सो इट वाज ऑलवेज दैट कि इस जनरेशन में वो टेस्ट था, वो पैलेट था वाजवान के लिए, एंड इट वाज जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग दैट आउट एज अ कम्युनिटी टुगेदर, कीपिंग पॉलिटिक्स अवे. Matamaal is a home away from home that we initially promoted it as. And it's a home for all, right? So मतलब जो happiness देखते हैं हम लोगों के faces पे, be it from any religion, any community, जिनने कश्मीर थोड़ा भी experience किया अपने lifetime में, that is what our earning really is from the brand. So I really want to also ask you, because you already pointed out, बहुत सालों पहले ना, सालों क्या मतलब 1-2 साल पहले, मैं randomly I stumbled upon a particular video on YouTube where they were beating the meat, और वो एक सेट पैटर्न में था, और एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक टाइप क्रिएट हो रहा था, और गाना गा रहे थे. सो इज देयर अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट दे सिंग और एनीथिंग? आई एम अज्यूमिंग कि गाना इसलिए गाते टाइम पास हो जाएगा. अब कितना देर से टक 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 गोश्त पीट रहे हैं तो गाना गा के टाइम पास चल रहा है. बट इज देयर अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट दे सिंग ड्यूरिंग दिस फीस्ट? Not really. No, this is one song which goes with that rhythm. So keep on, उनको वो ही आता है. जैसे सब situations का गाना होता है, इस situation का भी एक गाना they have evolved it. And then since it's a long process of pounding, so they keep themselves entertained, and it is very precise. It's not random pounding, बड़े precisely उनको ये काम करना पड़ता है. Then that gola comes out, what you call gustava and rista. Not very easy to make. Now randomly people can make at home, but it's not that. So काफी इसमें कुक की लेवल में भी काफी इसमें प्रिसीजन होता है. लाइक कैन नॉट से कि ये इसने कूटा और बन गया गोला, वो नहीं होता है. और इवन I remember when at Matamaal we started this whole process कि we would get into Wazwan, and my dad was like starting his research and all. The biggest and oldest Waza of Kashmir के साथ बैठ के समझ के, and his son was taught the whole art and he was brought in, and मतलब it's not something that anyone who's just spent a couple of years in the Kashmiri kitchen can come and make. It's the toughest craft out there. और अगर आप मतलब if you get an opportunity next time Archit is here or Sadaf will also come to Gurgaon, आपको देखना चाहिए जो हमारा ये 6-7 घंटे का पूरा प्रोसेस है वो गोश्तावर रिश्ता बनाने का. It's remarkable कि कितना प्रिसिशन लगता है, कितनी तैयारी लगती है. वो फ्रेश मटन से स्टार्ट होता है और किचन तक जब तक पहुंचता है वो 6 घंटे में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना मतलब हैमरिंग कितना करना है, किस लेवल तक लाना है, कितना फैट ऐड करना है. इट्स अ रिमार्केबल प्रोसेस. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट आई हैव रेड अबाउट जापानीज क्यूजीन कि जापान में जो सुशी शेफ्स होते हैं, they can't just be trained at any culinary schools. They have to be apprentices for a long period of time under a guru. And then eventually they are allowed to make sushi themselves. Yeah, it's a very generational thing. Yeah, it's a family driven thing. Legacy pass on hota hai, sabke alag alag techniques bhi hote hain. So you will also notice that different Wazwa families also have different minute culinary techniques which changes their way of presenting the food or how it would taste also. So impact bhi hai, that carries through for sure. Lovely. I was reading Rahul Pandita recently. His book Our Bone Has Blood Clots, and he was talking about the elaborate Mahashivratri celebration that happens in Kashmir and amongst Kashmiri Pandits. So, how important, how significant is food in the process of celebrating Mahashivratri? If you ask a Kashmiri Pandit,
his way of celebrating is only through food. हमारे भगवानों को भी पता है खाना देंगे अच्छा तो ठीक है, blessed, they are blessed. So it all revolves around food only. And Mahashivratri is our biggest festival. Like you look forward to that festival whole year. Diwali are the smallest. तो बट शिवरात्रि के लिए महीनों प्रिपरेशन चलती है एंड स्पेशली क्या बनेगा उस दिन, क्या नहीं बनेगा, एंड सफाइयां चलती है एक महीने पहले. इट्स ए ह्यूज फेस्टिवल एंड इट्स अबाउट सो गेटिंग वॉलनट्स एंड गेटिंग द पूजा राइट. एंड इन कश्मीर एवरीबडी यूज्ड टू बी, सिंस वी आर फॉलोअर्स, वी आर Shaivites, we used to cook mutton dishes on this day, mutton, fish and game, those flying birds. That was part of the tradition. Kashmir, I remember my dad getting all the stuff on that day. Huge sara din khana banta tha. And fish was part of that. No eggs, no chicken. They were not allowed in the kitchen. What was the reason behind? That's different. But this, and the lotus stem was part of Shivratri, Mahashivratri. So sara din puja karke, and में the ladies would cook inside the kitchen. Men would prepare the puja thing, क्योंकि वो भी एक, उसको हम वटुक भरना बोलते हैं, वो भी एक पूजा का जगह. You need to decorate it, and lots of pujas happening that day. And towards the end of the day, the head of the family only fasts, rest nobody else fasts. And शाम को meat अच्छे से खाते, भगवान को चढ़ा के all the preparations are eaten. And next day is salam. Salam is celebrating जब बारात आ गई शिव जी की, उसके बाद we celebrate the next day. Next day भी meat mass ये सब भी चलता है, and then greeting each other. But since people move to other parts now, some of them have become vegetarian on first day because they think यहाँ पे महाशिवरात्रि जो होती है, people are vegetarian on that day. So local adaptation कहीं-कहीं घरों में हो गई है, but generally it's a huge festival which is celebrated with lots of mutton, fish and whatever available. Like अभी recent मेरा experience था, अभी महाशिवरात्रि just was something else. मतलब it was a Saturday and a Sunday. Saturday we had maybe 10 different vegetarian items cooked at home, and Sunday we had 10 different non-vegetarian items cooked at home. तो मैंने भर के, मतलब मेरे आसपास के दोस्तों को, कलीग्स को, सबको पता चल गया है कि ये कैसे खाना किस प्रकार का और किस लेवल का बनता है, तो सबको खाना भेजना पड़ता है. मतलब वहां से ही मैसेज आ जाता है. इस बार का महाशिवरात्रि हमने मिस कर दिया है. महाशिवरात्रि जाएंगे. 2 questions on महाशिवरात्रि. One is that because Nalini ji आपने बोला कि खाना, तो is there a particular kind of food? And second is that महाशिवरात्रि जो the festivals that I have been part of, उसमें ऐसा पूरा of course रेगुलर बारात जो निकलती है, but also बिल्कुल नाच गाना होता है, रंग खेला जाता है. तो Kashmiris have a similar kind of महाशिवरात्रि celebration, or there is some variation, like a local variation? नहीं, लोकल तो अपना वेरिएशन लेके ही आई है, कश्मीर से ही आए हैं. तो we have adapted only the food part little bit, some of the families. बट हमारा ये होली टाइप नहीं होता है. दिन भर वी प्रिपेयर टुवर्ड्स द इवनिंग, डेकोरेटिंग द टेम्पल एंड डेकोरेटिंग द गॉड्स, एंड जितने फूलों से सजा, इट्स बेसिकली सजाविंग द बारात एट होम. एंड तो सारा दिन वही उसी की प्रिपरेशन बनती है. और जैसे मन में बाराती आ रहे हैं, तो व्हाट आर यू सर्विंग दोज पीपल, उसके हिसाब से खाने बनते हैं. बेसिकली अराउंड खाना एंड बेसिकली अराउंड पूजा. बस ये वो नहीं करते हैं जो यहाँ पे लोग करते हैं, रंग डालते हैं. Their way of celebrating is little bit different from ours. Alright. आपने fish mention किया, that's very interesting. So is fish a regular part of your food, and how is it prepared? Is it usually in a gravy, grilled? कैसे खाते हैं? Yes, fish is a regular part because apart from some days you need a break from red mutton, so the fish is available there. वहाँ पे तो fresh fish was always available, so we used to eat trout and some other kinds of fish were there. Fresh fish का तो अलग ही taste होता है. यहाँ पे we have adapted the local rahu fish, which has a bone, but I made sure that I keep that cooked in Kashmiri style at the restaurant. So that is like in a Rogan Josh kind of gravy, little bit of gravy. But कश्मीर में क्या होता था, वहाँ पे तो फ्रिज ब्रिज नहीं होते थे, ठंडी बहुत होती थी. वहाँ पे क्या होता था, विंटर में से फैमिली ऑफ 10 पीपल दे वुड कीप 5-6 किलो बनाते थे एक बार में. अच्छा. उसमें साथ में नदरू डालते थे, दैट लोटस स्टेम, और मूली डालते थे, व्हाटएवर अवेलेबल इन दैट सीजन. वो बना रहता था फ्रिज के बाहर. एंड द ट्रेडिशन वाज गरम राइस, बिकॉज ठंड बहुत होती थी, माइनस होता था टेम्परेचर. गरम राइस के ऊपर ठंडा फिश डालते, एंड देन यूज्ड टू कवर दैट विद राइस
इसको थोड़ा सा टेम्परेचर सही करने के लिए, that used to be divine combination. And here that I've applied the same thing here in my restaurant. We serve cold fish, educate them. I said, if you want to eat it the Kashmiri way, so you have to eat cold fish with hot rice. There are some people who don't want to eat cold fish. In that case, we warm it up. But generally, the tradition is fish should be always eaten the next day and with garam rice. Thanda ekdam fish se nikala hua and garam rice. Next time we show you how to eat it when you come. That's fascinating. ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. ये करना पड़ेगा. ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. ये मैं आके करूँगा. That's fascinating. और कोई festivals apart from Mahashivratri which involve significant amount of eating? I told you, this is all about eating. The day we know that tomorrow is Ashtami, we will not think कि कौन सी पूजा करनी है या क्या पहनना है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है कश्मीरियों में. कश्मीरी ये सोचता है कल क्या क्या बनेगा. जैसे अष्टमी है, अष्टमी comes every month. Once this comes in the second half of the month. हर महीने में होती है. People fast on that day. And no onion, garlic ये सब नहीं होता है, कुछ भी नहीं चलता है उस दिन, और अच्छा सात्विक खाना बनता है. बट एक दिन पहले ही टेंशन होता है कश्मीरी पंडित को, कल तो मीट खाना ही नहीं, तो शाम को वो भर के मीट खाता है. डे बिफोर शिवरात्रि, द डे बिफोर अष्टमी, शाम को ठीक से मीट खाता है. एंड द नेक्स्ट डे जब अष्टमी इज ओवर, नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो पहुंचता है बुचर शॉप पे मीट लाने, क्योंकि उसने कल दिन में नहीं खाना होता है. इतनी इंटेंसिटी है मटन खाने की कश्मीरी पंडित की. सो कश्मीर में ऐसा ही सीन होता था. सुबह सुबह अष्टमी के नेक्स्ट डे पे बुचर शॉप पे सारे पहुंचे होते थे मीट खरीदने को, क्योंकि कल उन्होंने खाया नहीं होता था. सो अष्टमी के दिन वेजिटेरियन खाना बनता है. देन वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट खाने बनते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट खाना. आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल अबाउट खाना. नो ड्रेसिंग अप, क्या कपड़ा खरीदना है, क्या पहनना है. जैसे लाइक पीपल गो आउट टू सेलिब्रेट. कश्मीरी, a typical Kashmiri Pandit celebrates at home with good food, with family. That is the thing. Lovely. So I have a question on that. When you are saying that, food is all about like festival food, simple, period. But is there a particular kind of food that is cooked at particular festival, or it doesn't matter? We could talk about guard bath. हाँ. जैसे why don't you talk? You know that. You tell. Yes. I won't be as good as my mom describing it, but I'll try my best. So yes. Our family ki we have kul devtas, right? So we have our own god that we, for protecting our house and family, us hisab se. So I believe this is God Kuber. So we're trying to pray to him. So ek din aata hai, winter mein most likely, right? That is Khitamawas. This is for another god, like winter god. Winter god. So mera knowledge thoda off hai. So I'm glad my mom's on the call. So ek baat ho gaya us baat hai. But in that presence, hum kya karte hain? Like my mom will prepare fish, and really really good fish, as she described. Cold fish, hot rice, right? We'll prepare a plate as an offering for the god. And raat ko around certain time, what we do is we put it outside. And it's a very cute story, because as a child, me and Hans assumed something happened and we could get into that mode. हम क्या करते थे, खाना बाहर रखते थे, चावल, fish, and I think that was about it. And उसके ऊपर कच्चा fish भी रखते हैं. कच्चा fish भी रखते हैं. Thank you. कच्चा fish भी रखते हैं, and then we put a candle there. So everyone, prays and asks for forgiveness and thanks to God, and then we close the door, अंधेरा हो जाता है, सब सो जाते हैं. So that's how we do it. It's a very nostalgic thing for us, me and Hans, because we know कि guard bath aa rahe, हाँ fish रखना है बाहर. It's an awkward thing for the young generation to adapt and acknowledge, but when you do it for so long, it becomes so much of a part of you that you can't see beyond it. So for us as children, my mom would take out the plate subah and she would move, but we don't know that, but हमें लगता था चावल हिला हुआ है and fish हिला हुआ है. So for us, we always thought कि कुल देवता है, he ate some food. In that sense, you always as a child thought it was like a Santa Claus Christmas type of scenario for us, right? So it was always exciting कि कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है. तो रात को I would go out and check. Maybe it's a bird, being a science background, maybe कोई bird था, कोई आदमी होगा, Eventually, later on in life, we found out that my mom would move it for our excitement, and that was he was our Santa Claus in many ways. Right? But in Kashmir, they believe that the बर्फ में वो आता था, बर्फ देवता जो आता था, वो आके he would just touch a bit of it. उसमें एक छोटा सा fish रहता है साइड में,
कच्चा फिश जिसको हम पूछते हैं, उस पे कट नहीं लगना चाहिए, जैसे चाकू नहीं लगना चाहिए उसमें स्पेसिफिकली। वो साइड में रहता है, पूजा करके बाहर रखते हैं। अब तो यहाँ पे बालकनी में रखते हैं, वहां पे तो बाहर पे दीवार पे रखते थे। एंड उसके बाद दरवाजा नहीं खुलता था, बाहर नहीं जा सकते, उसके बाद अंदर ही अंदर खाना होता था। एंड नेक्स्ट डे एवरीबडी वुड बी गेटिंग अप एक्साइटेड, ओहो आया था, फुल डे था, आया था। अब यहाँ पे तो हम थोड़ा चालाकी हिलाते हैं, चावल वावल, वहां पे लगता था कि होता था। अभी भी मेरे को पता नहीं कि if my mom moved it, अब she's admitting to it, but generally speaking I still assume कि कोई ना कोई तो आया ही हो, क्योंकि रात को दरवाजा बंद करते हैं ना। अब तो सच्चाई बाहर आ गई, अब तो रिकॉर्डेड है क्या। एक और विंटर फेस्टिवल होता है जिसको हम खिचमावस बोलते हैं। खिचमावस के दिन मूंग दाल की खिचड़ी बनती है। सब घरों की अलग अलग रीत होती है। तो हमारे घर की रीत है, हम मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं और हम बनाते हैं मीट और गोगजी टर्निप, दैट्स अ विंटर वेजिटेबल, वो बनता है। एंड कच्ची मूली एज अ सैलेड, दिस इज हाउ इट इज। एंड हाँ, उसमें एक मोंजा अचार होता है जो हमें नोल फूल गांड गोभी का अचार होता है, वो दैट्स अ मैंडेटरी। लाइक अगर वो नहीं होगा तो पीपल विल गो, मतलब वो रखना है जरूरी थाली पे, which is offered to God. So 4 things are very important in that. These are winter festivals. Then comes what is that? जिसमें पूड़ी बनती है, पान, हाँ पान, वो भी बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, जिसमें वो मीठी रोटियां बनती है। दैट इज हमारी जो गॉडेस है, जो हमारी रक्षा करती है, उनके लिए वो भी एक रात को उठ के वो मीठी पूड़ी बनती है, फिर पूजा होती है। So हर फेस्टिवल की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। नॉट दैट एवरी डे वी ईट मटन ओनली, बट वेजिटेरियन भी होता है बहुत ज्यादा, और वेजिटेरियन खाने भी हमारे बहुत है, which are away from what we serve at the restaurant or what are fashionable food से भी simple foods भी बहुत सारे हैं जो इन डेज में बनते हैं, सात्विक खाने। अच्छा, मेरा एक मटन के बारे में सवाल है, सो please correct me if I'm wrong, but मैंने सुना है that sheep meat is preferred over goat meat in a lot of Kashmiri families. Is that true? Sheep is well available there. यहाँ पे होता नहीं है, so we settle on lamb. Yeah, of course there. Yeah. There sheep meat is preferred. Yeah. अच्छा. Easily available also. Easily available also. In Kashmir, for example. अच्छा, और do you feel there's a significant difference in the taste, texture of the two meat? शुरू में लगता था there is, because this one is quite lean. What we eat here, this is lamb, is quite lean. These are like weighing around 10, maximum 10 to 11 kgs lamb. तो वहाँ पे तो बड़े होते थे, weighing around 15 to 20 kgs. तो थोड़ा सा मटन में तो कंसिस्टेंसी में फर्क पड़ता था, but now we are used to it. इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, but yes, as a Kashmiri, inside me, I know that was better. Got it. But again, regionally speaking, we still, जैसे पुणे में we still serve sheep, right? जो जहाँ preferences है वहाँ उस हिसाब से. Okay, got it. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, but we'll be back with a lot more ज्ञान. Alright, तो हमने ब्रेक ले लिया छोटा सा और आ चुके हैं वापस. और क्या अच्छा, एक चीज ना मेरी जिंदगी की बहुत ही आई थिंक एवरीबॉडी लव्स इट, और मैं ओवर रोमांटिसाइज करता हूँ, वो होता है ब्रेड. मतलब बताया था ओवर रोमांटिसाइज है. आई रियली वांट टू राइट अ बुक एज वेल on just on breads, covering breads. And when we talk about breads, we talk about few of the places in India which are popular for their bread. Kashmir, of course, being the one, right? And it's like a whole range of breads, not just like ऐसा दिल्ली में मिलता ना कि अच्छा एक ही टाइप का शीरमाल मिल गया और बस खत्म. मतलब of course if you order, then you get like 18-20 different kinds of breads. लेकिन अमूमन एक दो टाइप के मिलते हैं. But Kashmir has range of it, right? And or not just bread, but I also know the culture behind it. Like I know, for example, correct my pronunciation, throat cover, which goes with the bride. कि ऐसे ब्राइड लोग ऐसा डोली में बैठे हुए, तो ऐसे बेशर्मो तो खाना मांग लेना, तो ये लोग रोटी खाओ. चुपचाप से डोली के अंदर जो है ऐसे शर्मा के ब्रेड खाओ. बाल पौधा लिया है, ब्रेड खाने का तो ऐसे मांगने का है. So what is the tradition? Why Kashmir is so much about bread? And is there also significance of rice as compared to bread? I can touch upon the history. Yeah. I can touch upon the history of the bread. Yes, anytime. And I know, Sadhu, you go into the historical aspects of cuisine. So इसमें मैंने थोड़ा सा research किया है.
ज़्यादा नहीं, but I can share some of the tidbits that I've collected. I mean, if you look at the like Asia in general, there's a large pocket of this style of bread, starting from Iran to regions of Uzbekistan and stuff, and you'll see there's a lot of similarity. And I feel like some of this bread, the knowledge of bread making has traveled from Samarkand. A lot of people say Samarkand was the starting point of all of this, right? तो उसी से ये sort of adopt हुआ है और फिर adapt हुआ है Kashmir में. And when it adapted to Kashmir, as you can see, all our even a lot of people say our cuisine in general has a lot of connections with Persian cuisine, with Irani cuisine, right? But you'll see that there's a stark difference, right? I've sat with a Persian person, I've tried talking to Kashmiri, वो कहते हैं नहीं मेरे को एक word नहीं समझ आ रहा है, तुम क्या बता रहे हो वो भी नहीं समझ आ रहा है. But you still see there's a similarity, right? So we adopted it, we adapted it, and that's how the whole culture of bread came through. Now it's this wide variety of things, from sweet, sour, something you can have with tea, something you can have as a dessert, which we're not really dessert people, but we still have some breads as a dessert, right? It's a wide variety of things. There's also a very strong spiritual connection to this. So I can, I'd let my mom talk a little bit more about it, but the ovens are actually blessed by God herself, right? And if you don't mind giving a little bit of story about that. Yeah, please do. Okay. Now, first of all, you asked what is the culture like bread, how we use breads. So breads for morning tea and evening tea is very, very important part of our culture. Like the morning breakfast, there was no scope of making parathas or anything at home. The bread would be bought from nearby kandur, we call that bakery kandur, and every locality had their own kandur. Like har gali mein apna ek baker hota tha, and the youngest of the family would go and get the breads for the morning morning breakfast, which could be eaten with butter, with omelette, jam, honey, which was always available in abundance. The lunch would be always rice, staple, that's rice, and dinner would be rice. Afternoon, since the lunch was eaten early, so the afternoon tea was also very important. Tea and different kind of bread like katlam or bagir khani, telvor, kulcha would be eaten with afternoon tea. So that is how we define our breads and rice, a part of our whole, like the whole culture. Now comes the special breads, that's rot, which is a festival based rot. एक तो वो festival में बनता है, not every day, on order they make it, and then we make it. We started that. This had actually died down, this rot covered thing, since we moved out of Kashmir, because there were no bakers available who could make bakery for them, who make rots for them. So since Matamaal came into inception, we started this rot cover again. The rots are sent with the bride when she leaves for her in-laws home. And the in-laws announce by giving the piece of this rot. Now I think worldwide people get rots from us, and they send that the trunk load of rots with their daughters. So at least these are Kashmiri breads. Then there is culture of like these English breads also. We get the best of coconut cookies, walnut cakes, what do you call it? The patties and all that stuff. So that is influence of English. That is also prevalent there. That is also part of our bread. So huge culture. We've evolved it also. Yeah. And we've evolved it. It's not your normal English chicken patty. It's with our Kashmiri influences in it. So you can taste a stark difference. And the history behind this is also that a mystic, also known as a poet, Laleshwari, Lal Ded, उनका नाम था. तो उनका ट्रेडिशनल जो सिग्निफिकेंस है इसमें हर एक बेकर अपने तंदूर के ऊपर उनका एक फोटो लगाता है. And the story that dates back to centuries is that she was being followed by someone and made the king of that time, and she went in, hid in a tandoor, in a live tandoor of a baker, but she came back as is, like untouched. So वो उनका हाथ, सारे bakers का हाथ, मतलब लाल देद she has blessed everybody. She has blessed, basically she's blessed. So she said जहाँ पे भी बहुत मानते हैं bakers उनको, तो it's like a thing. Basically जहाँ पे भी तंदूर लगता है,
she gave the blessing कि जहाँ पे भी आप तंदूर लगाओगे वो हमेशा चले. So that's always been her blessing for it. So they really, Akandu, which is a baker, they really believe in it, and they, you start off with the prayer, and then you start off with that. It's a very religious thing. That's one thing. The bread has so much meaning to it. Life starts from bread. That's what I always feel like. Exactly. But also, when you are serving, it's a funny, interesting question because when you're selling kulcha, for example, now a Delhi guy or an NCR guy will go and ask you for kulcha, which is different kulcha in Delhi, NCR, and in Kashmir, it's a different kulcha. So, what are the different things, and how do you manage to tell your customers कि चुपचाप से खाओ ये कश्मीरी कुलचा या दिल्ली कुलचा नहीं? नहीं, हमने अपने मेन्यू में डिस्क किया है online. When I look at the order, I said, Satyanash, this guy has ordered Rogan Josh with kulcha, and he thinks kulcha is North Indian kulcha. So sometimes I call the customer, I said, this is not the wrong choice. Do you still want to try it? Yeah. But more or less now they are educated. And even for Sheermal, they thought this is North Indian. So to clarify for our listeners, जो breads होती हैं वो typically अलग से ही खाई जाती हैं, not with the greaves. Greaves के साथ चावल खाए जाते हैं typically, right? Typically वो खाए जाते हैं, but people have started eating this kind of honey, lavash with food, with Rogan Josh, they love it. अच्छा. That is adaptation. Like we told that the bread you eating it because here people instead of serving that to try the whole serious Kashmiri food, probably they love it. They love it. It's an insider tip for you guys. Having mutts with bagir khani is a revelation. Yes. Yeah. Dan, this is I will try that out. Yes. Hans, you also started Kans and Mohol. Tell us more about that. So this was, the story goes back to 2006 when we, as a family, visited Kashmir for the first time ever. So it was my brother's first time in Kashmir, and mom died after the 90s. Like they were living abroad, but उनका भी घर जाना बहुत पहली बार था in years. So visiting dad's house, it was like a 20-room huge mansion with a small lawn आगे. And उस lawn में एक huge mortar and pestle पड़ा था. Huge, like it was a stone mortar and pestle जिसको हटाने के लिए almost एक crane लगेगी या 20 लोग लगेंगे. So हम तो वो देखते ही रह गए. हमने कहा this has some meaning to it. ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये तो ये at least 200 साल पुराना होगा, और सिर्फ शादियों के टाइम पे इसको उठा के बीच में लाते थे घर में, because शादी के टाइम पे women around the neighborhood would get together and sieve spices, like they would make their own spices जो पूरे साल के लिए चलते थे उस mortar pestle में. तो mortar pestle in Kashmiri is called Kans and Mohol. So आप ये मान लो कि हम चारों ने डिसाइड कर लिया कि इसका तो कुछ करना है लाइफ में. To fast forward to 2018-19, we realized that Kashmiri Pandit food or Kashmiri food overall, and this was most of dad's effort over years, spices का एक बहुत important role है Kashmiri cuisine में. Now all the spices don't grow in Kashmir, like your ginger powder, soft powder, fennel, it doesn't grow in Kashmir, but it's quite prevalent, and then also the backstory to that is कि कश्मीर में roadways अगर नहीं थे for the longest time, during winters it was landlocked, that area, long time. Yeah. So people used to hoard on these sort of spices, right? And of course, like, I mean, there's a cultural significance and historical significance कि how they found a fennel powder, how they found a ginger powder, वो कहाँ से आया, कैसे आया, spice route से आया, all of that was there. But we figured कि एक बहुत important role in our food, the taste that we're bringing to the market, is the spices, the raw material that's being used. While mutton, chicken, fish, and your meats was figured locally, spices का एक बहुत ज़्यादा important role था. So 2019 we took the leap and we bought some machines कि हम हमें खुद के spices बनाने हैं. So we have to have everything so proper, so perfect, because when it was outsourced, the taste and flavors were changing. So we started retailing those unbranded. It was kept at the restaurant. So internationally, US से लोग आ रहे हैं, across the world लोग आ रहे हैं, airport से, मतलब they're just dropping by just to come to Matamaal and experience. So they would just pick up these spices and then they would call us. कि we need more. How do we order and what's happening? कि अब आदत लग गई, अब मिलेगा कहाँ से?
तो फिर हमने 2020 में we launched K&M. So this was the whole D2C setup. We wanted to just bring out all of these things जो हम सारा खाने में यूज करते हैं, एक चीज research करके we started K&M. So this was e-commerce first, digital first brand, Amazon, Flipkart. It's available on. It's been over 3 years now. And I mean, that's what we've scaled that also exponentially. It's become a thing in itself. And one of the core things that helped K&M was also Matamaal's success. Because Matamaal's success, even though it was limited to a certain location, it wasn't, in fact, because all these national TV shows that my parents were on, and एक worldwide एक नाम बन चुका था. So it wasn't very hard for people to sort of trust a newer brand that's come in this space. And Kashmir in itself, with so much focus on it, it lost its trust somewhere in the middle. When you talk about saffron, you talk about pashminas, you talk about a lot of things, because बहुत adulteration आ गई, बहुत चीजें fake आने लग गई market में. So people didn't have one go-to brand that they could trust. That's been built over time. So that's what Matamaal and K&M together stood for. I'm curious because apart from bread, of course, there's spice as well, which I'm fan of. Yeah. About Archit बोलेगा सब तुमको ही पसंद है, कुछ छोड़ा ही नहीं है. So spices again is the soul of any food, right? And interestingly, what you mentioned about कि ginger उगता नहीं कश्मीर में, fennel उगता नहीं, लेकिन usage बहुत है. Saffron, for example, बहुत उगता है कश्मीर में, लेकिन उतना usage कश्मीर में नहीं था, लखनऊ में. Exactly. So two different places, and लखनऊ के आसपास में ginger उगता है. तो of course कहीं से travel हुआ था. I think मादियम रेशी की जो किताब भी आई थी, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफाइन भी किया था कि किस तरीके से है. For people, for listeners, we will put Madhyam Rishi's book in the show note as well, so tension na le. But what I'm curious is to understand this mysticism, this thing about the Kashmiri mirch. ये रहे आज भाई साहब दिखा रहे फ्लेवर स्पाइस अपने YouTube चैनल पे, जो हम देख सकते हैं वो देख लें. दिखाओ फिर से दिखाओ अर्चित साहब. बहुत बढ़िया. YouTube पे कम ही लोग देखते हैं, पर जो लोग देख रहे हैं you can see it. और ये भाई साहब लिंक इन द शो नोट्स. कहीं से चुराया है, R2C क्यों लिखा है इसके ऊपर? ये मैंने पीरिया साकेत जो दिल्ली में मार्केट है, वहां पे सेकंड हैंड बुक्स मिलती है, तो वहां पे क्लियरली R2C ने अपनी बुक की कॉपी बेच दी थी उनको, और मैंने खरीद ली. मदियम मैम को बोलना पड़ेगा, मदियम देखिए आपने गिफ्ट दिया होगा इसको, R2C को उसने बेचा. खैर, तो व्हाट इज विद कश्मीरी मिर्च? व्हाई इज इट लाइक कुछ भी नॉर्थ में कुछ भी बनता है उसमें कश्मीरी मिर्च जाना जरूरी है? इज इट द सेम विद कश्मीरी फूड एज वेल कि कश्मीरी मिर्च के बिना खाने में नहीं? वो कलर इंपॉर्टेंट है. जो आप कोई भी दुनिया की कोई भी मिर्ची लो, ये कलर नहीं आएगा. ये कलर है कश्मीरी. यू सी बिगेस्ट ऑफ द बिग शेफ्स कहीं पे तो वो बोल देंगे कि यू यूज कश्मीरी मिर्च, है ना, कश्मीरी लाल पाउडर, लाल मिर्च पाउडर. एक तो ये स्पाइसी नहीं है, एट द सेम टाइम इट गिव्स दैट कलर व्हिच इज बियॉन्ड, जो एक डिश को बहुत सुंदर बनाता है. बिकॉज व्हेन वी पाउंड दीज मिर्चीज, होल मिर्चीज, तो वो सीड निकालते हैं तो स्पाइसीनेस कम हो जाती है, बट द कलर इज तूफान का. तो ये स्पेशल काइंड का मिर्ची होता है, और एवरीथिंग अबाउट कश्मीर इज स्पेशल. यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. सब कुछ स्पेशल खाने से लेकर that actually हाँ जी बोले. नहीं, मैं कह रहा था कि that makes me realize how important aesthetics are also to what we देखने में भी सुंदर लगना चाहिए, because सबसे पहले हम अपनी आंखों से खाते हैं, फिर हम अपने मुंह में डालते हैं खाना. पहले तो हम देखते हैं. One important thing is there is no decoration of our food. हमारा कुछ प्लेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधा साधा खाना है, बट हमारा खाना ही गुड लुकिंग है. मतलब वो आइटम ही गुड लुकिंग है, सजाने की कोई जरूरत नहीं है. कोई हवा नहीं चाहिए, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं, पानी नहीं चाहिए, वो यहाँ से गैस आ रही है, यहाँ से बबल्स आ रहे हैं, हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा खाना इज एक्चुअल सोल फूड. जब आप खाएंगे नेचुरल ब्यूटी है उसमें, जैसे कश्मीरी नेचुरल ब्यूटी होती है, वैसे ही हमारा खाना भी. सो इवन द धनिया थिंग, वी डोंट नेवर डेकोरेट अवर फूड. धनिया तो है ही नहीं. अगर कोई धनिया डाल भी लेता है, ऑलवेज पॉइंट आउट इसने सब गलत कर दिया, धनिया तो है ही नहीं. तो वी रादर यूज शाही जीरा, कहीं पे भी यूज ड्राइड मिंट पाउडर, जहां पे जिस फ्लेवर को वो एनहांस करेगा. नॉट पुट पार्सली भी डालो, धनिया भी डालो, जिंजर भी डालो, डेकोरेट करो, ये करने की जरूरत नहीं. सो फ्लेवर्स ही दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अब आपको इट्स रियली, अच्छा हाँ बोलिए. Ma'am, I just wanted to add a little more. When you look at the cuisine in South
the base flavor is really the spices in the oil. So it's tempering the spices in the oil. And then that is accentuated with the meat. So you're really enjoying the meat coated with the spices. Oh, concept. Right. I've traveled enough. I've had some more cuisines. That concept is very rare and limited. You see some of it in Spanish cuisine, some of it in Mexican cuisine. But वो idea Kashmiri out of the Indian subcontinent इतना popularized नहीं हुआ है. In my take on it, I guess, right? So that's an interesting take, and I think that's an opportunity for us to promote that idea to Matamaal. Yeah. अच्छा मेरा एक पर्सनल सवाल है, लिसनर्स को पता नहीं रेलेवेंट लगेगा कि नहीं, बट जो आपका रायता है कि रेस्टोरेंट में, आई एब्सोल्युटली लव इट. मतलब आई थिंक आप कॉम्प्लीमेंट्री को देते हैं, तो मैं तो बहुत मंगवाता हूँ, नॉट बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बट इट्स सो गुड. तो वो रायता में क्या क्या डलता है? सिंपल रायता है. सब बता दे, सीक्रेट बता तुम्हें. आप क्या समझते? नहीं कोई बात नहीं, वी हैव ट्राइड इट, यू नो. This is just simple मूली and grated मूली and dahi and थोड़ा सा अपना little bit of touch of my hand, and then just जीरा पड़ता है. And now there are so many people, इतना भी free हम दे दे, but still people want to make it at home because I make it sound so easy. So they tell me how to make it. मैं पूरा procedure उनको बताती हूँ. And then when they come next time, no, we could not make it. हमारा तो बना ही नहीं. So I think it is kind of you mastered that. एक दिन में कुछ भी मास्टर नहीं किया है, सालों लग जाते हैं कुछ भी मास्टर करने में, but वो मूली चटनी मातामाल जैसी कोई नहीं बना सकता. अच्छा, it's not a रायता, it's a चटनी है. Yeah, we call it मूली चटनी. तो हमारा जो मुचेटी, हमारा जो you know, whenever I plan a meal, I always plan chutneys with it. So chutneys have to be there. अच्छा. जैसे बहुत सादा चटनीज होती है, जैसे पुदीना, फ्रेश पुदीना, बिकॉज हमारे कश्मीर में छोटे किचन गार्डन्स होते थे. सो एवरीथिंग वुड पिक अप, यू नो, प्लक्ड फ्रेशली. थोड़े से मिंट निकाला, थोड़ा सा साबुत मिर्ची काट लिया उसमें से, किचन गार्डन में से पाउंड किया इसी में, मोटर एंड पेंसिल में. हर घर में ये होता था, नॉट मिक्सीज एंड ऑल. थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, रॉक सॉल्ट, क्या बढ़िया बनती थी. एंड हैव विद योर हाफ और समथिंग. So chutneys are part of our cuisine. Walnut chutney is there, onion chutney is there, pudina chutney is there, anardana chutney is there. So हमारे यहाँ बहुत सारी चटनियाँ भी बनती हैं. This enhances the whole setup of the dish. अच्छा, ऑफलाइन जब हम थे हम, तो आप बता रहे थे there's a special Kashmiri Pandit style of serving food. So can you talk more about that as well? Mikhail will take it up. Or Hans. I think how the three of us are also divided is mom can give you historical कि बचपन में कैसा होता था. हम आज का बता सकते हैं आपको कि आज हमारा perception. अच्छा. So I will give you a little background of the situation. कैसे होता था वहाँ पे खाना. So वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, ठंड होती थी. अच्छा. So the kitchen would be a huge room. एक साइड किचन होता था with दान is like मिट्टी का चूल्हा. I'm talking about old days, like before my grandmother's time. Beginning of my grandmother's time, not when she was very old, not that time. तो एक साइड में मिट्टी का वो होता था लंबा सा चूल्हा, एक साइड में बैठने का अरेंजमेंट होता था. बैठने का लोअर सीटिंग और लिटिल हायर सीटिंग, तख्त पोश हम उसे बोलते थे. तख्त पोश वाज यू नो लेयर्ड विद मैट्रेसेस, और उस पे वो गब्बा होता था, गरम बेसिकली सब, एंड कुशन्स अराउंड, एंड पीपल वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग ऑन द साइड. एक साइड में किचन बन रहा है, लेडीज खाना बना रहे हैं, और इधर बाकी लोग, बच्चे, यू नो, जेंट्स वुड सिट देयर. सो खाना, जब खाना लगता था तो एक शीट तब होते नहीं थे, वाइट काइंड ऑफ ए क्लॉथ होता था, वो डालता था. थालियां डलती थी. वी ऑलवेज हैड थालीज. तब तो एलॉय की थालियां होती थी. एलॉय इज अनदर मेटल. उसकी थालियां सबके सामने एक एक थाली लगती थी, लाइक द डेली काइंड ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग. एंड या तो थाली किचन से ही बन के आती थी, लाइक लिटिल राइस, लिटिल सब्जी, लिटिल मटन एंड जो भी बना हो वो थाली में ही डलता था. कटोरियों का सीन नहीं था इतना कुछ. हाँ, हेड ऑफ द फैमिली लाइक माय ग्रैंडफादर, ही वुड हैव वन कटोरी. और ये था मतलब बैठ के हम लोग सब लाइन में खाते थे. थाली किचन से यूजुअली बन के आती. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब शादियां होती थी तब एक ह्यूज लाइन में लोग बैठते थे. जैसे आप देखते हैं ना गुरुद्वारा में लोग बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं, ऐसे ही वहां पे भी बैठते थे. सफेद कपड़ा, उनके सामने दस्तरखान लगता था, और फिर थालियां बिकती थी. लाइक one person would lay the thalis, another person will come with rice, another person will come with mats, rogan josh. तो सबको एक एक पीस करते he would finish 2-3 rounds,
and then another person. वो एक रो में जाता था, पहले हाफ खाएगा, फिर ये चीज आएगा, फिर दम आलू आएगा. तो दैट इज हाउ फूड वाज सर्व्ड दैट टाइम. मतलब एक साथ ही सारा खाते थे, गरम गरम खाते थे. These and everybody would participate in weddings. All the neighborhood जो भी youngsters थे, they would enjoy doing it. They would take the job of serving. सब घुल मिल के शादियां होती थी. You would not hire people. You would not hire people जैसे serving staff and ये सब नहीं होता. So it was, the weddings were like a close knit family affair. Even the बर्तन were not bought और सबके घरों में दीगचे होते थे. तो एक दिन लगता था वो दीगचे कलेक्ट करने में, सब घरों में जाना होता था, नाम लिखे होते थे अपने अपने. दैट वाज द कम्युनिटी फीलिंग. एक दिन होता था जिस दिन चावल साफ होता था घरों में इस शादी का, तो सारे मोहल्ले की लेडीज आती थी, बाहर गार्डन बड़े बड़े होते थे, बैठ जाते थे, सामने चावल होता था, सारा दिन गाने चल रहे हैं, कश्मीरी फोक सॉन्ग, एंड चाय बन रही है, वो कश्मीरी टी जैसे शीर चाय हम बोलते हैं, दूध चाय. मतलब सेलिब्रेशन शादी की तो एक महीना पहले चलती थी. ये नहीं आजकल आया बैंड बाजा. मतलब हाउ डू यू एंटरटेन पार्टीज, यू जस्ट पे देम एंड दे डू एवरीथिंग. दिस वाज एवरीबॉडी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द वेडिंग. सब मतलब ये एक घर की शादी नहीं होती थी, पूरे नेबरहुड की शादी होती थी. फिर एक दिन होता था जब मसाले बनते थे, लाइक मिर्ची आ गया, एक दिन सुखाने में लगता था, 2-4 दिन में सूख जाता था. फिर कोई उसके वो बीज निकालता था. देन द लेडीज वुड बारी बारी पाउंड इट इन दैट. मशीन ये सब नहीं होती थी. तो कितनी उसमें फीलिंग कितनी अच्छी थी. मतलब ये फीलिंग कहाँ मिलेगी अब तो सब एवरीथिंग इज कमर्शियल. यू जस्ट that everything's a shotgun wedding now. Yeah, it is a shotgun. You pay and you get your job done. That was you didn't pay anybody. Everybody was part of your celebration. That was the feeling. Now we talk about this generation, how we serve. I want to add a little bit of perspective, and this is a very interesting perspective because I remember this, and abhi in any family dinner, it's very obviously hoga. So as mom said, normally some relative would serve you food. So you would always be overfed. It was conditioned कि नहीं और खाओ. तो ये customary हमारे family में कि खाना खत्म नहीं होता है जब तक आदमी प्लेट उठा के भागे नहीं, तब तक खाना खत्म नहीं होता है. तो it was very important. इंडिया में जनरल भी है, मतलब खिला पिला के बेचते हैं, तो that is prevalent. बिल्कुल. हम लोग सारा प्यार खाने में ही निकालते हैं. मतलब जब तक अगले की आंखें ना पॉप आउट करे, हम छोड़ते नहीं है उसको. नहीं खाना ही है. The same feeling I apply at Matamaal. In the beginning, I would rather both of them would tell me, मम्मा आप सिर्फ मुंह में नहीं इनके खाना डाल रहे हो, आप एंड तक उनको ये भी बता रहे हो कैसे खाना है. Because I wanted them to eat it my way, not mess up everything. पहले ये चीज खाओ. When you are educating somebody, you want them to eat educated in a proper way. तो मैं उनको वो सब प्रोसीजर भी सिखाती थी, उनके साथ बैठ के अब आप ये मिलाओ, अब आप ये मिलाओ, ऐसे खाओ. बस वो उनको मैं निवाला मुंह में नहीं डालती. So that is how this Matamaal became like the प्यार भरी जगह, like where you were not treated as somebody is coming to restaurant में जैसे जाते हैं. तो वो ठंडा माहौल नहीं था. Always the warmth was there and still there. I want to confirm this part what Nalini just mentioned because जब मैं गया था तो मेरे साथ यही शुरू हुआ था. तो बिल्कुल मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, खाना खाना तो बिल्कुल इसे अब नहीं हो पाएगा, फिर अरे थोड़ा सा और. So that what you mentioned, that warmth is there. I think that's why it's Matamaal, right? You're going to your mother's home. तो अम्मा तो खिलाएंगी ना पकड़ के. तो मुझे बड़े मजे आए थे, भले ही बिल्कुल आंखें बाहर आए, मजे बड़े आए. वही है इंटेंशन, तो वही है. मतलब मजे आए बस. आजकल कहाँ मिलता है. But how that is true. अब तो जाए अपना खुद खाना उठाना पड़ता है. बुफे तो है, अब तो बुफे. अब बुफे है बस. But how is the modern day of the same Kashmiri way of eating food? Pandit way of eating. अभी like I mean in the recent maybe 10 years जो हम weddings में गए हैं या हमारे cousins हैं, in fact my brother got married also recently. So while we try to keep that tradition and love alive जो mom was talking about, but कहीं ना कहीं कुछ modern touch आ गया है. नीचे बैठना तो है, like नीचे तो we have to sit, वो एक चादर लगेगी white color की,
बच्चे एक एक करके सर्व करेंगे खाना, like it's just going to be a feast. So I mean, I feel like 99% of the things are still the same. Like there is no really, I wouldn't say there is a modern touch. Like the feeling of having a cook come in जो previous night से खाना बनाया जा रहा है, फिर एक एक करके लोग वहां जाके बैठ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं कैसे बन रहा है, अगले दिन वो सर्व करना. तो I think it's quite the same. Like I wouldn't say there's a modern touch. बस अब ये है कि थाली सब वो स्टेनलेस स्टील वाली हो गई हैं जिसमें वो है, वैसे ही है. Like I wouldn't say कि there's much of a difference. So that is one of the things like alive. हमारा ये मैं कोशिश करता हूँ जब आपके रेस्टोरेंट आओ तो टू सिट ऑन द फ्लोर, वो जो कोने में एरिया है वो फ्री है, मैं चौकड़ी मार के बैठ के खाता हूँ वहाँ पे भी. लोग खा के फिर सो भी जाते हैं उधर ही, lying down for a while. So अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, which is our underrated, overrated and favorite food segment. तो ऐसे स्टार्ट करते हैं. Let's have one question from each. We'll have Mikhail talk about the overrated, we will have Hans to talk about the favorite, and we'll have Nalini ji to talk about the underrated Kashmiri. चलेगा? Yeah. बहुत बढ़िया. So we start with let's say favorite. So Mikhail, what's your favorite then? What's my favorite? I've been talking about kabarga recently. I can't stop thinking about it. The way I was explaining it to someone, because conceptually लोग कहते हैं, what do you mean it's fried mutton? क्या मतलब है fried mutton? But it's like mom was mentioning chutneys. उसके साथ अनारदाना की चटनी खाना या मिर्ची पुदीना की चटनी खाना. It's a different experience altogether. I'd strongly recommend it. And there's another thing that I learned when I was in Matamaal for a few months. I noticed a lot of people from Japan, Korea, China come to the restaurant to eat just kabarga. They would order plates of kabarga, right? Because it's a very common thing there to have. They have the grilled, I forget the term for it, but they do grilled meats, right? Yeah. So for them, that's an extension of that part. And same way, baseline light flavors, right? And then you complement with the chutney, with the pyaz, which is what Koreans also have, right, in their Kashmiri tradition for side dishes and stuff. Yeah. So that's one of my favorite dishes, hands down. Hans, you're overrated? Overrated, I think for me it's liver. लिवर के एक दो डिश बनते हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है. टैमरिन बेस्ड लिवर एक है, तो that is for me it's overrated. Like some people love it, like they can kill for it, like they just want it, but मेरे को समझ नहीं आता वो कैसे खाते हैं और उसका फ्लेवर प्रोफाइल भी नहीं समझ आता उसका. I want to, from a nutrition perspective, I want to add कि liver is one of the best multivitamins in the world. इसमें सारे दुनिया भर के विटामिन होते हैं, बट आई एग्री विद यू अंस, मेरे भी उसका टेस्ट it doesn't work for me. I know सबका different in terms of it. Mainly also it doesn't work. I think but it's very healthy. You have to grow into it as a child. Like early on, I had yellow rice and sarvan olu kehte, which is essentially liver and aloo. Personally, I also didn't like it. Hans was lucky to get out of that situation. Now I've gotten used to it. मन करता है कभी कभार एक दो बार खा लूं, that kind of thing. You have to get used to the flavor. It's not easy for any. Liver is like. हमारे यहाँ बनता है. नहीं, आप बताइए, आपके यहाँ क्या बनता है लिवर? हमारे यहाँ बनता है लिवर पे तो बकरीद के टाइम पे ना, बिकॉज अभी आपने गोश्त ज़िबा किया है तो जो सबसे फ्रेश मतलब क्योंकि लिवर इजीली निकलता है, सबसे पहले लिवर ही निकालते हैं, तो जब वो घर पे आता है फ्रेश बिल्कुल तो वो करता है, एंड देन दैट बिकम्स द फर्स्ट मील, प्रॉपर मील ऑफ द डे, बकरीद के फर्स्ट डे या सेकंड डे पर. और वो रेगुलर प्याज मिर्ची वाली ग्रेवी होती है, प्याज एंड विद पराठा. दैट्स अ स्टेपल एट आवर फैमिली ड्यूरिंग बकरीद. बट अर्चित ने पहले मेंशन कर दिया है कि पूरी की पूरी क्यूजीन ही अंडररेटेड है, तो लेकिन अंडररेटेड क्यूजीन में भी जो अंडररेटेड डिश है नलिनी जी, वो क्या है आपके लिए? मेरे हिसाब से तो अंडररेटेड है कलिया. कलिया इज turmeric, cooked with turmeric and milk, and some flavors of ilachi. But to get kalia right is not everybody's job. If you get your kalia right, you have mastered the cuisine.
वो सबका नहीं होता है। तो किसी का जिस घर से कलिया अच्छा बने तो मतलब इनको पता है खाना कैसे बनता है. So that is underrated, which I am promoting as much possible because I try to explain the benefits of that. You're eating so much of turmeric in that and सारे अच्छे flavors है. That I think is underrated, strictly underrated. So people. तो कलिया में मीट डलता है या सब्जियां डलती है? पनीर का कलिया भी बनता है, पर मीट का कलिया अच्छा। लोगों को समझ, क्योंकि उन्होंने कुछ येलो डिश देखी नहीं है, थोड़ा समझाना, बट पनीर कलिया तक तो लोग पहुंच गए हैं. But I really want them to understand and try mutton kalia. Very smooth and easygoing, clean flavors. हमारे वैसे खाने में ना जनरली आप देखोगे कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स नहीं है. अगर आपको रोगन जोश है तो इट विल बी क्लोव बेस्ड एंड बिग कार्डमम का फ्लेवर आपको ज्यादा दिखेगा. यखनी होगी तो इलायची का फ्लेवर ज्यादा दिखेगा. ये कलिया है, इट इज टर्मरिक बट पेपरी एज वेल बिकॉज वी यूज होल पेपर इन दैट. तो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर नहीं, एक ही में आपको 10,000 फ्लेवर नहीं मिलेंगे. गुड क्लीनिंग, दैट इफ वन अंडरस्टैंड्स दैट, तो दे विल अंडरस्टैंड द वे हाउ दे विल अप्रिशिएट दैट दिस कुजीन. जैसे हाक है, हाक इज दैट कोलार्ड ग्रीन और जो भी आप बताओ तो. हाँ जी. इसमें कुछ भी नहीं जाता है, मस्टर्ड ऑयल एंड हींग, इट इज बेसिक. हाँ, तो वो अगर किसी ने समझ लिया उसका फ्लेवर, उसको कुछ चाहिए ही नहीं. वो बेसिकली आपको फ्लेवर समझने की जरूरत. नहीं, एक सवाल है मेरा किचन से रिलेटेड है कि ऑफ्टन ना हम जब किचन में अपने अलग फेलो कुक्स एंड फेलो शेफ्स को जब ट्रेन कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो अक्सर होता है कि दे आर लाइक नो बट दिस इज नॉट कुक्ड दिस वे, ये ऐसे नहीं बनता है, ये वैसे बनता है. आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम्स आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द किचन्स इन वेस्ट दिल्ली, और मैं उसको बोल रहा था इसको ऐसे बनाना है, नहीं लाइक नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनता है. तो मैंने बोला भाई ये तो ऐसे बनता है. सो देयर वाज लाइक अ 5 मिनट का डिस्कशन बैक एंड फोर्थ वहीं पे आ गया था. बट देन ही सेड कि हमारा हाथ खराब हो जाएगा. एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन बाय हाथ खराब हो जाएगा? इधर क्योंकि हमने ऐसे सीखा है, अब आप कुछ और सिखा दोगे और हम किसी और रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो अब हम आपके स्टाइल से बनाएंगे तो हमारी नौकरी गई ना फिर. तो 5 मिनट डिस्कशन उसी पे था. But then when you are training, and then Kashmiri cuisine, as you mentioned, is a complex. Simple है, and yet that's the complex part of it. Like Kalia, what you mentioned, I think a lot of people just screw up कि अरे इतना simple कैसे हो सकता है? कुछ तो extra जाना चाहिए ना. So how do you then convince your staff? हाँ, how do you convince your team कि नहीं यही है जो है, इसके plus minus कुछ नहीं करना? देखो, सबसे पहले if some cook is there, उसने कुछ चीजें सीखी है, उसको undone कराना is the worst job. मतलब उसको पता है यखनी में मैंने आटा डालना है, चावल का आटा डालना है, वो तो मानेगा ही नहीं, बोलेगा ये तो बन ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं होता. सो मैं कभी शेफ्स को ट्रेन नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल इंसान को जिसको ABCD भी नहीं पता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दोज पीपल जिनको मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ. उनको बस वो सीधी लाइन से चलते हैं, उनको इधर इधर कुछ पता ही नहीं होता है, दे जस्ट फॉलो मी. दिस इज माई फंडा ऑफ टीचिंग, दिस इज हाउ आई टीच. क्योंकि जिसको आता हो उसको सिखाना वेरी डिफिकल्ट, वो मानेगा ही नहीं. करेक्ट. बोलेगा नहीं क्या में तो ये डालना, आप क्या बोलते हो, इसमें तो मैं ये डालता था. तो तुम कुछ अपना दिमाग नहीं लगाओ, बस मेरे दिमाग से चलो, तो दैट बिकम्स मच इजी. So that is the secret of. अब आपको समझ आया ना? Yes, that's how it. Yeah, that's how it. So नलिनी जी, हंस, मिखाइल, बहुत मजा आया आपसे बात करके. ऐसे लगा नहीं कि हम ऐसे कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे लगा हम ड्राइंग रूम में बैठ के गप्पे मार. So बहुत मजा आया. But before we let you go, please share what your future plans are for Matamaal. You were discussing it offline. Yeah, the boys will go ahead with that. अभी pipeline में definitely Matamaal we want to grow, but the essence of Matamaal are mom and dad, तो अब उनको और जगह रख नहीं सकते. तो essence मतलब in our hearts we know that Matamaal needs to reach places. You can expect a Matamaal 2.0 which looks like a leaner model, which may talk and boast a lot about culture, cuisine, right? A leaner tea room sort of a model you can expect, with a lot of focus on a retail space, like हमारे products हैं, उसको हम एक अलग level पे ले जाना चाहते हैं. Like we want to do a lot of more things in the modern world, like with our butters, with like spice blends, with different types of jams, from exploring Ladakh and exploring different regions. So ये दोनों चीजें parallel में चलेंगी.
And of course, events, we are very highly focusing on high-end Kashmiri events across the country. We've done quite a bit now. So ये 3 parallels अभी साथ में चलने वाले हैं. The whole angle of Perfect. us talking about weddings, it's a good callback. We really want to bring those really sacred traditions and try to modernize it, so everyone can get back to what really mattered to them. That's really important. Yeah. Super. Awesome. Amazing. हम आएंगे soon Matamaal दोबारा. मतलब बहुत बार आ चुके हैं, दोबारा आएंगे soon. But it was a pleasure chatting with all 3 of you. Thank you so much for coming on the Naan Curry podcast. Thank you. Thank you so much. Thank you. We had wonderful time. Thank you. Yes. Lovely. दुकान बंद करते हैं बस.